Hi, my name is Sanchit Dudeja. I work for Adobe at SDE-V level, and after seeing such an overwhelming response of solid system design course which was free on YouTube, I am here with the next lead. Guys, जिसने भी solid का course देखा है उसने उसकी तारीफें ही करी हैं. He or she has circulated it in the community really well, and in case you have not seen it yet, then I must say you're missing out on something. If you're looking forward to improving your system design skills, guys, that course is for you, and I assure you there are no charges involved, no hidden fee. Do give it a shot. बहुत ज्यादा लंबी प्लेलिस्ट नहीं है लेकिन बहुत वैल्यूएबल है. I promise nobody from the industry will give you so much detail, so much depth of the concepts which have been provided in those videos. And again, it's time for take 2 of enhancing your system design skills through muscle up system design patterns. तो पता लगेगा आज कि कोड सही से कैसे लिखते हैं. पर भैया एक क्वेश्चन पूछूं, मैं तो जेनजी हूँ. आई एम ओनली आफ्टर मनी. सिस्टम डिजाइन से मेरा क्या फायदा? मैं तो डीएसए भर के नेक्स्ट कंपनी क्रैक कर लूंगा. सो माय डियर कॉलेज स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू व्हाई डू यू नीड कमांड ऑन लो लेवल सिस्टम डिजाइन. व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स? सो रिमेंबर, यू हैव टू बिकम लंबी रेस का घोड़ा. इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन दैट यू नीड टू रन. You have career of approximately 37 to 38 years. You come out of college at the age of 22. You retire at 60. तो 38 साल तुमने काम करना है, कैसे कर पाओगे? If you don't know low level, high level system design. बहुत ही basic level पे बात करूँ, the biggest advantage of learning low level system design is that you will be able to write good quality code. Quality code से क्या होगा? You will be able to build scalable and complex systems. उससे क्या होगा? You will be looked out for design suggestions. उससे क्या होगा? You will be able to build good reputation in the team. And अगर young level पे अच्छी reputation बनती है, as a result of which you get faster promotions. तो अगर रैपो अच्छी बनानी है टीम में, नाम कमाना है, तो low level system design is the key. तो शुरू करें डिजाइन पैटर्न्स. गाइस, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं टीम में क्या काम करता हूँ. तो मेरा काम टीम में ये होता है. आई एम द टेक लीड, द आर्किटेक्ट दैट टेल्स पीपल हाउ थिंग्स शुड ऑपरेट इन माय माइक्रो सर्विसेज, हाउ डू वी बिल्ड स्केलेबल एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स. एंड दीज फोक्स हु वर्क अंडर मी बेसिकली वर्क एट द लो लेवल सिस्टम डिजाइन एंड एक्चुअली बिल्ड दोज सिस्टम्स अप. But being the guard keeper, the gatekeeper, the guard of the entire workflow that is happening in my system is my responsibility. Now let's talk about various categories in which system design patterns can be distributed. So there are 3 such categories. The first one is creational design patterns that talks about initialization of the object in your system, depending upon your use case. कि किस केस में किस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए. And there are further 5 subtypes of creational design patterns: factory, abstract factory, singleton, prototype, and builder. Most of you would have heard about these names, at least builder, singleton, prototype, factory बहुत commonly used होते हैं क्योंकि ये creational design patterns हैं और हर system में objects को create होंगे ही होंगे. The next one that we have is structural design patterns that basically talks about the structure of the class depending upon your use case, whether it is inheritance or whether it is composition, which one suits the best for your particular use case at that particular point of time. And there are 7 categories of structural design pattern: adapter, bridge, composite, decorator, facade, flyweight, proxy. ये सारे बहुत इंटरेस्टिंग डिजाइन पैटर्न्स हैं. लोगों ने काफी सारे करे होंगे यूज, बट आई एम प्रीटी श्योर सबके बारे में सबको नहीं पता होगा. And this course is all about getting these concepts in detail. The next one that we have is behavioral design patterns, and it basically talks about the connection your objects should have so as to achieve loose coupling and ability to extend. Flexibility चाहिए सिस्टम में, तो कैसे अचीव करते हैं? Behavioral design patterns के थ्रू. It talks about the interaction that your objects should have at different layers. And इसके 11 categories होती हैं: chain of responsibility pattern, command pattern, interrupter pattern, iterator pattern, mediator pattern, memento pattern, observer pattern, state pattern, strategy pattern, template pattern, visitor pattern. कुछ बहुत फेमस डिजाइन पैटर्न्स हैं जो बहुत ऑफन यूज होते हैं सिस्टम में. फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वर पैटर्न, स्ट्रैटेजी पैटर्न, टेम्पलेट पैटर्न, विजिटर पैटर्न, वेरी कॉमनली यूज्ड, बट सबके बारे में सबको नहीं पता. तो आज पता लग जाएगा. तो जाओ
किसकी वेट कर रहे हो? सिंगलटन की वीडियो देखो एंड वी विल सी कि सिंगलटन पैटर्न 6 तरीकों से कैसे बनाते हैं. Bookmark the playlist, move on to the next video and do let me know how do you find it. Take care, goodbye.